चलिए, so after doing multiple questions on gross profit ratio, let's continue with the operating ratio. I repeat, children, what? Operating ratio. Please write one more name for this so that you do not get confused in operating and operating profit ratio. वन मोर नेम इज, ये नाम मैंने ही दिया, आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेसिकली इससे. डन एवरीबॉडी? सो बहुत सिंपल सी बात है चिल्ड्रन, बहुत सिंपल सी बात है. अगेन आई हैपन टू ड्रॉ दैट चूरन, आपको शायद याद होगा. चलिए, रेडी एवरीबॉडी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी यूज टू राइट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस minus cost of revenue from operations equals to gross profit. It looks like we are into some satsang. Minus operating expenses. The answer is operating profit. Very good. इतना तो इसका मतलब होमवर्क किया लोगों ने. जब आप बॉर्नवीटा खा लेते हैं एनर्जी आ जाती है आपके अंदर और आप दौड़ने लगते हैं. तो होमवर्क इज जस्ट लाइक बॉर्नवीटा चिल्ड्रन. जब आप खा लेंगे आपके अंदर एनर्जी आएगी. बाकी दिन जब होमवर्क नहीं करके आते एकदम WC बन जाते हैं, वेट कैट, बिगी बिल्ली, चुप रहते हैं एकदम. देन चिल्ड्रन आफ्टर दिस मैं थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बना रहा हूं इसको. वी ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड वी सबट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस and thereafter we get what is called as शुभ लाभ, नहीं शुद्ध लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लोगों को पता है ना दीपावली में क्यों शुभ लाभ बोलते हैं? गणेश जी के दो बच्चे थे, एक का नाम शुभ, एक का नाम लाभ. उन दोनों की वाइफ का नाम क्या था? रिद्धि एंड सिद्धि. समझ में आया कि नहीं? चलिए, सो चिल्ड्रन ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. नाउ द रेशियो विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज टाइटल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग रेशियो. बहुत ध्यान से सुनिएगा. लेट अस से नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, cost of revenue from operations is 30. What would be your Google Pay? 70. Operating expense is say rupee 10. सबको नजर आ रहा है बच्चों? What would be your operating profit? 60 rupee. Non-operating income, let us say 7, and non-operating expense rupee 2. What is plus 7 minus 2 children? 65. गलत जवाब. प्लस 7 माइनस 2 5 होता है. 60 में जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 65. इसीलिए कहते हैं सुन के जवाब दिया करिए. एक बार मैंने रिक्शे वाले से पूछा, वो स्टैंडिंग ऑन द क्रॉसिंग, मैंने कहा विल यू गो टू अ पर्टिकुलर एरिया? ही सेड यस. मैंने कहा देन गो, व्हाई स्टैंडिंग है. समझ में आया? जितना पूछा जाए बच्चों से उतना जवाब दीजिए. इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं. चलिए भाई, प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल चिल्ड्रन. और इस एग्जांपल में हम दो चीजों को कनेक्ट करेंगे. पिंकी आंटी कह रही हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ऐड कर लीजिए. तो पिंकी आंटी एकदम बिग बॉस है, उनकी बात को हम मना नहीं कर सकते. व्हाट इज 30 प्लस 10 चिल्ड्रन? 40. दिस इज known as operating cost. समझ में आ गया? So children, now the ratio is operating cost upon net revenue from operations. ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है. The Tota approach says this: CORFO plus operating expenses whole divided by net revenue from operations. We happen to get what is called as operating cost. समझ में आ गया? मतलब न्यूमरेटर को आप टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, होल मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आ जाएगा. समझ गए सब लोग? चलो, सो इन आवर एग्जांपल चिल्ड्रन, व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट? 40 रुपीस. एंड व्हाट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? 100. सो चिल्ड्रन द आंसर वुड बी व्हाट? 40%. गेटिंग इट करेक्ट? एक काम और भी कर लेते हैं चिल्ड्रन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारे पास? एक्सेलेंट आंसर. एंड व्हाट वाज सो कॉल्ड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस?
What is 60 upon 100 into 100? This is 60%. अगेन पिंकी आंटी हमसे पूछ रही हैं, अगर हम इन दोनों को चिल्ड्रन ऐड कर दें, व्हाट वुड बी द आंसर? 100%. हरी अंकल है, समझ में आ गई बच्चों बात? सो आपसे बोर्ड में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 40%, व्हाट वुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? 60. If operating ratio is 10%, what would be operating profit ratio? Operating ratio ये 10% है चिल्ड्रन, तो ये कितना होगा? कहने का मतलब दोनों का सम हमेशा 100 होगा। लॉजिक समझ में आ गया? Now the question rises, how to derive the formula? Again very simple children. How to get operating cost? एकदम simple है. The first formula is cost of revenue from operations plus operating expense. ये सबको समझ में आ गया? एक फॉर्मूला मैं आपको और सिखाता हूं. What is net RFO given children? What is operating profit given? 100 minus 60 is what? 40. Simple as that. तो अगर आप net RFO में से माइनस कर दें आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चिल्ड्रन, what you would happen to get certainly? फॉर्मूला समझ में आया? पक्का? COGS is 30 children, plus in operating expenses we have office and administrative and selling and distribution. So either you say operating expenses or bifurcate it as office and administrative and selling and distribution. बात एक ही है, समझ में आ गया? पक्का? Either you say CORFO or you say COGS, it means one and the same thing. So in any question, I repeat, in any question, if you have net revenue from operations, GP and operating expenses, you will be able to calculate operating ratio children. Operating profit भी तो calculate हो जाएगा जब इतना पता लग गया तो we can also calculate children operating profit ratio or not. तो ये चारों ratio बड़े closely related है. Whenever a question comes, high probability is there कि आप चारों calculate कर लेंगे. Is that understood well? So quickly update this children, quickly update this, then we proceed further. So you have the Brahmastra with you children. सिर्फ और सिर्फ ये चूरन आपको याद रखना है. All profitability ratios on the basis of RFO can be easily calculated. Okay, chaliye, let's continue. So children, use common sense and answer. This ratio is a composition in the numerator of expenses or incomes? Very good. So it focuses the magnitude of expense. हमारा खर्चा कितना है? As a good businessman, you would try to keep your expenses as low as possible or as high as possible. So a lower ratio is better, but higher ratio would indicate that your profits are not going to be very high. तो खर्चे जितने कम होंगे, profits उतने ज़्यादा होंगे. Okay, चलो, let's start children. Question number 57, cost of purchase, that is cost of goods sold, given to us. Operating expenses also given to us. RFO is also given to us. Let's draw the sequence children. Let's draw the sequence. Quickly draw the sequence. Quickly draw the sequence children, quickly. Net revenue from operations, do we have it in the question? How much? 2,50,000. Cost of RFO is also given? Yes. How much? 150. What's your Google Pay? 1 lakh. Do we have operating expenses? Yes. How much? So we'll come to know what is operating profit with us children. Other incomes and expenses are not given. Had those been given, we could have written them. Again, your net profit will be how much? और आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ऑपरेटिंग रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग रेशियो? CORFO plus operating expenses.
whole divided by net RFO and whole multiplied by what? चलिए हो जाएगा. न्यूमरेटर टोटल इज व्हाट? अलग अलग लिख के करिएगा. 150 प्लस 60. डिनोमिनेटर टोटल इज इन 200. 0 0 बन गया हीरो. 0 0 ये भी बन गया हीरो. 2100 upon 25 is what percentage? Be quick. %84. Okay. Children, got everybody 84%? Yes, sir. चलिए हैंड इन हैंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर ले. द फॉर्मूला वुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट RFO whole multiplied by 100. What is operating profit coming? 40,000 upon 2,50,000. मैं बिना कैलकुलेट करे ही आपको बता सकता हूँ आंसर 16% आएगा. चलिए अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? दोनों का टोटल 100 था, वो 84 हो गया, तो ये कितना होगा? अब कुछ लोग जो सुपर आलसी कैटेगरी के हैं, सर इफ इन द एग्जाम बोथ आर टेस्टेड, एक को कैलकुलेट करेंगे और दूसरे को 100 में से माइनस कर देंगे, तो फिर आपकी मार्कशीट को उल्टा करके देखेंगे आप, तो 100 आएगा आपका. समझ में आया? डोंट ट्राई दैट लॉजिक. वो सिर्फ उन्हीं एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस में करना है. समझ में आई बात? चलो चलो बात समझ में आ गई. Yes, sir. ऑपरेटिंग रेशियो इज आस्क्ड फ्रॉम अस. हम दोनों कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन. ओके, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वील डू, वील ड्रॉ द सीक्वेंस. सो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस खांसी की दवाई कोरफो, आंसर इज गूगल पे, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, द आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बहुत ज्यादा पाप हमने किए नहीं है, तो बहुत ज्यादा डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है. बस पानी छू के निकल लेते हैं, ठंडी का सीजन है और नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है. डोंट एक्ट एज अ स्कूबा ड्राइवर, मतलब एक्ट एज अ स्कूबा डाइविंग expert, not as a diver searching for corals under sea. What is net revenue from operation, children? CORFO is what? Google Pay is how much? Gross profit, children. Operating expenses are given 20,000. What is your operating profit? 10,000. Will people be able to calculate both operating ratio and operating profit ratio? Chaliye, do it very quickly, children. The formula is operating expenses plus CORFO upon net RFO whole multiplied by 100. So children, it is 30 plus 20. How much? 50,000 divided by whole multiplied by 100. 83.33. Similarly, for operating profit ratio, the formula is operating profit upon net RFO whole multiplied by 100. So the name of the ratio itself indicates the formula. So always remember, operating ratio जब आप calculate करते हैं children, never write the text operating cost. I repeat, never write the text operating cost, rather write this duo. So what is operating profit coming? 10,000 upon 60,000 into 100. So it will come 16.67%. तो अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर ली है तो 10,000 upon 60,000 में सिंपली वैसे काट पीट के दिखा दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा. समझ में आगे बच्चों? Yes, sir. चलिए
सो अगर आप दोनों को ऐड कर दें, वोंट इट बी कमिंग 100? पक्का? चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है हमारे पास। चलो, कॉस्ट ऑफ परचेज या CORFO आपको कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो इज 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 60,000 and net RFO is what? Let's put the formula first. What's the formula of operating ratio? CRFO. CORFO plus ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्लीज इसी सीक्वेंस को यूज करिए, थोड़ा बेटर लगता है। पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लग रहा है कि सारी बागडोर बहू के हाथ में है, सासू माँ के घर में कुछ नहीं चलती। 25% is given, children. So for removing percentage, we'll put what? 25 not 100. Do we have CORFO? Let खांसी की दवाई टोरेक्स का भाई कॉर्फो बी एक्स। एक्स प्लस 60,000 अपॉन 2,50,000। प्लीज आगे मल्टीप्लाइड बाय 100 मत कर दीजिएगा, ये जो 100 था ये यहाँ आ चुका है। जैसे लेफ्ट का प्लस राइट का माइनस, राइट का प्लस लेफ्ट का माइनस, वैसे राइट लेफ्ट में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा। ओके, लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन तो राइट में डिवीजन। इतनी मैथ आनी चाहिए आपको, और नहीं आती तो सीख लीजिए स्क्रीन से। सो चिल्ड्रन लेट्स डू दिस। इट इज 25 1s are 25 4s are, so 2,50,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू 4x प्लस 240। 4x मत लिख दीजिएगा, 4x would remain same, 250 is on the left, राइट का 240 जब जाएगा तो कितना बचेगा चिल्ड्रन? 4x इक्वल्स टू 10,000, तो x इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 4। व्हाट द वैल्यू ऑफ x चिल्ड्रन? 2500। और x आपने क्या अज्यूम किया था? CORF। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल्सो लेट मी नो ऑपरेटिंग कॉस्ट चिल्ड्रन, आ जाएगा आपका आंसर? हाउ मच? करेक्ट चिल्ड्रन, दिस इज वन वे आउट टू डू द क्वेश्चन। एक और तरीका है क्वेश्चन करने का, आई एम डूइंग इट इन द बॉक्स हियर। फॉर्मूला तो सेम होगा, 25 अपॉन 100 इक्वल्स टू, आप x से कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं, y अपॉन 2,50,000। तो आपका पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, करेक्ट? 4y इक्वल्स टू 2,50,000, y इक्वल्स टू 2,50,000 अपॉन 4, y इक्वल्स टू 62,500। अब ये 62,500 आ गया, चलो करेक्ट। इस 62,500 में ये 60 हो गया, तो रिमेनिंग ये कितना होगा? ऐसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच है। तो मल्टीपल वेज आर देयर टू डू अ क्वेश्चन, कैसे भी करिए, बोर्ड सब पे मार्क्स देता है। ओके, सिमिलरली चिल्ड्रन 60th क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? स्टार्ट फास्ट। So let's understand again children, we'll put the formula. Operating ratio equals to CORFO plus operating expenses divided by what? Net RFO whole multiplied by 100. So here operating expense is not given, so what you can assume this as x, let this be as x. So 25% है तो 25 upon 100 हो जाएगा, equals to 1 lakh plus x upon 10 lakh. So 25 1s are 25 4s are. It is children 4 lakh plus x, sorry 4 lakh plus 4x, sorry, equals to 10 lakh. So this 4x would remain same, 10 minus 4 would be 6 lakh.
1.5 आ जाएगा चिल्ड्रन ये। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,50,000 आ रहा है। चलिए कौन सा रेशियो है नेक्स्ट बच्चों? ये तो आप सब निकाल ही चुके हैं, समझ में आ गया। चलिए सो सेम क्वेश्चंस वी हैव चिल्ड्रन, सेम क्वेश्चंस, तो इसलिए अब हम क्वेश्चन करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 64 पे हम आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज टू बी फाउंड आउट व्हेन ऑपरेटिंग रेशियो इज गिवन एज 13%. Children, there is a specific way to do this question. You will put it like this: operating ratio plus operating profit ratio equals to 100. So what out of the two is given to us? 13% plus x equals to 100. Therefore x equals to what? 100 minus 13, 87%. थोड़ा सा नाटक ज्यादा करना है. Will people be able to do the next one? Yes. Be quick, be quick, be quick. So again same formula यहाँ पे भी आप कॉपी कर लेंगे. ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो x plus 27% equals to 100%. X equals to 100% minus 27%. What's the answer? 73%. सबको समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Let's reconnect children and start with the last in this category titled as net profit ratio. अब net profit कोई अनजान नहीं है, हमको पता है net profit क्या होता है. The last profit that we have in the sequence of income statement is known as net profit. So gross profit ratio में formula was GP upon net RFO. Operating profit ratio में formula was operating profit upon net RFO. Net profit ratio में formula would be net profit upon net RFO whole multiplied by 100. हो जाएगा? चलिए let's reconnect children and continue with this.